So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as you can see the thumbnail, in today's class we will be discussing about UN Biodiversity Conference, or what we call it as COP 16, which very recently actually happened in the last week of October and the first week of November. And I find it important, and that is why I have decided to conduct this class for the upcoming exam. So and I find it important. So if I'm audible, visible, everything is fine, please write yes in the comment section so that we can start the session. Okay, so I hope you are aware कि UN Convention on Biodiversity के अंदर में Conference of Parties होता है और recently COP 16 happened. So we will discuss in detail about all the conference of parties, I mean the important ones, कहने का मतलब, and the different conference of parties which happened and all. So I'll be discussing in today's class this concept in detail. Yesterday we had this class all about the Ladakh protest, Sonam Wangchuk and 6th schedule. If you have not watched it, please go and watch it. This is very important for the upcoming exams. ठीक है, बहुत important है. तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा. And in the last I had given some homework. एक तो NSC and IM के बारे में पूछा था, Assam Accord और Section 6A. So ये दोनों एक ही चीजें, मतलब दोनों both are linked to each other, and there was recently a Supreme Court judgment regarding this. इसीलिए मैंने पूछा था. I have taught this in paid classes also. तो NSC and IM देखो इसमें कुछ लोगों ने आंसर किया. Yes, परी जाट पटनायक had answered me. ठीक है, good, very good. Then Orhan Kim had answered me correctly about NSC and IM and all. ठीक है, तो NSC and IM के बारे में मैंने क्यों पूछा था? Because yesterday it was in the news. आप देखो 9 नवंबर की न्यूज है, NSC and IM threatens armed violence etc. तो ये नाम न्यूज में था. And there was a Naga Accord, फिर 2015 में एक agreement हुआ था. देखो लिखा है this, go and read it because now it is also in the news, NSCN, which may be asked in the examination. इसीलिए मैंने आपको कहा था ये पढ़ने के लिए. Okay. Now एक और जो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd दिया था, आसाम अकॉर्ड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था. वो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इन द अक्टूबर, and that is why you should be knowing it. Assam Accord से लिंक था वो. ठीक है, so under Assam Accord this was agreed. ये मैंने लगा दिया, please go and read it. And this was challenged in the Supreme Court, Section 6A of Citizenship Act, which was actually made under after Assam Accord was signed. इसको challenge किया गया था, but Supreme Court upheld it. Uphold means declare it to be correct, constitutionally right. ठीक है, that is what you should be knowing about. इसको आप पढ़ लीजिएगा. I have taught in detail in the paid classes the concept, but you should read at least. अगर आप, if you are not from paid student, paid batch. Okay, so let's begin with today's class. आज की क्लास में चलते हैं. Let's begin. Okay, so before beginning of today's class, I want to emphasize on this class very much. अगर आपने नहीं देखा, please go and watch it. This is very important. Important environment summits, career launcher, law interest. Just search, you will get this video. And I have discussed important environmental summits. ये जरूर देख लीजिएगा. That would be very helpful. Okay, now let's begin with the questions. And along with the questions, we will actually keep on learning. So the first question is UNCCD, UN Conference on Environment and Development, happened in the year what? And this, or first you tell me, answer this question. And it happened in which country? So I'm waiting for the response. UNCCD. कुछ तो मैंने यहाँ कराया भी था. I've already discussed. UN Conference on Environment and Development. Yes, Rahil, you are right. 1992. And this is famously called as which summit? एक और इसका नाम है, famous name. And it happened in which country or which city? Yes, Sukh, Rahil, you both are right. A is the right answer to this question. Yes, Tanishka, Dharini, you are right. Yes, Sukh, you are right. Actually, इसको हम लोग Rio Summit भी कहते हैं, है ना? Why I'm starting from here? Because इसी से लिंक है आज की क्लास. ठीक है, so I'm starting from beginning till end ताकि आपको समझ में आ जाए sequence wise. That is why I'm starting from here. Yes, Rio Summit, Brazil. Yes, Dharini, right. Rahil, you are right. So 1992 में जो Rio Summit हुई थी, जिसको हम लोग Earth Summit कहते हैं, actually it is also called as Earth Summit.
इसका ऑफिशियल नेम ये है UNCCD, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये 1992 में अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। अब ये हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील में, सो दैट हैपेंड इन रियो डी जेनेरो व्हिच इज अ प्लेस इन ब्राजील, ओके। सो यस, अर्थ समिट और ये सेम है, यस धरनी, राइट, हाँ। तो लेट मी शो हियर इज इंडिया, दिस इज एक्चुअली साउथ अमेरिका, ठीक है। और इस साउथ अमेरिका में यू विल फाइंड अ कंट्री कॉल्ड एज ब्राजील, ये रेड वाला जो है दिस इज ब्राजील, एंड इन ब्राजील यू विल फाइंड रियो डी जेनेरो। और इस साल कौन सी समिट होने जा रही है? दिस ईयर अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, यस। इस साल अभी कुछ दिन, आई मीन आई वुड से इन हार्डली few weeks you will see this, the G20 summit 2024 is also going to happen at the same place, इसलिए रियो डी जेनेरो इंपॉर्टेंट हो गया। प्लीज बी केयरफुल, ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरो नहीं है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, just remember it, ठीक है। Yes, Dharani and Gopesh Arts both have answered me correctly that this year G20 summit is going to happen in Rio de Janeiro, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग, अभी हम लोग we have discussed about Earth Summit. Now, why I am discussing in this class Earth Summit, उसका वजह है वो लिंक है आज के क्लास से, so there's a link, so that is why I am discussing it. Let's move on to the next question. Please read the question and then answer me. The question is, which of the following is not the result of UN Conference on Environment and Development, यानी वही अर्थ समिट इसको कह रहे हैं। देखो एग्जाम में नॉट लिखने वाला कोई नहीं मिलेगा, no one will underline not in the examination hall, you have to do it. Here I am doing it, but exam hall में आपको करना होगा। यानी अर्थ समिट की रिजल्ट में कौन सी चीज नहीं आई थी, मतलब उसमें वो चीज नहीं कंटेन थी। यस, स्नेहा दागर एंड गोपेश आर्ट्स आर सेइंग ई, यस द राइट आंसर एक्चुअली इज ई। ये सारी चीजें यहीं से फ्लो करता है अर्थ समिट से, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको तीन प्रोमिनेंट चीज जो हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। एक UNFCCC निकला था, एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी था, और तीसरा था यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है। और इन तीनों के अंडर कॉप होता है। आई हैव टोल्ड यू ऑल अंडर दीस थ्री यू विल फाइंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कई बार। एंड ये वाला जो होता है, दिस वन, जो मिडिल वाला, दिस वन हैपेंस एवरी ईयर, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट। अगर आपको पूछा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस वन, UNFCCC, ठीक है। हालांकि इसके अलावा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी होती है, जैसे कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी वाला कॉप भी होता है, और UNCCD वाला भी कॉप होता है, ठीक है। आज हम लोग ये वाला कॉप के बारे में जानेंगे, दिस वन, UN कन्वेंशन अंडर बायोडाइवर्सिटी, दिस वन व्हिच आई एम स्टार मार्किंग, ठीक है। और UNCCD के अंदर भी कॉप होता है, और UNFCCC के अंदर जो कॉप होता है वो हर साल होता है, इट हैपेंस एवरी ईयर। बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर CBD and UNCCD and UN Convention to Combat Desertification, these two do not happen every year. ये मैंने कई बार हाईलाइट किया, you have to be clear, crystal clear. दूसरी चीज, अर्थ समिट में और भी चीजें हुई थी, जैसे एजेंडा 21 की बात हुई थी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। एजेंडा 21 मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, ये बात कही गई थी, ठीक है। So this is what you should be knowing about. Okay, I hope it is clear now. Is it clear? Everything is fine? Because ये important है, I'm sure कि there will be some questions they can ask, ठीक है। खैर, now we are talking about UNFCCC, तो हम लोग शुरू करते हैं UNFCCC से। So UNFCCC की फर्स्ट कॉप कहाँ हुई थी और लोकेशन क्या था, कोई बता सकते हो? We are talking about this one, which is the by default, ये वाला। Yes, the right answer, yes, Dharani and Sneha Dagar, you are right. B is the right answer. And at which place?
Yes, Gopesh Arts, you are also right. Berlin, Germany, Sneha Dagar, very good. So UNFCCC के अंडर में लिख देता हूँ, UNFCCC के अंडर में जो this happens every year. So the COP1 happen in Berlin, Germany. So this you should know. And the latest one is going to happen where? I think yeah, wait, the next question. UNFCCC COP28 happen in dash and COP29 will happen in dash. COP28 मतलब last year जो हुआ 2023. And this I'm asking both last वाला भी और इस साल वाला भी. हाँ, इस साल वाला तो बाकू अजरबैजान में, very good, you should know. Yes, last वाला कहाँ हुआ था? UAE. Yes, Dharini, very good. So last one actually happened in Dubai. तो दुबई में UAE जगह है. ठीक है. So you should know this. Great. Yes, Dharini, Rahil, Sneha, Gopesh, Tanishka, you all are right. You should know this. इस साल जो है वो 2024 अभी कुछ दिन में you will see in few weeks you will find this. Last year it happened in Dubai, UAE. और next वाला बेलेम जगह ब्राजील में होगा. ठीक है. So you should know this. This year वाला सारे चांस है पूछे जाने के, of course. Now the next one is अब हम लोग बात कर रहे हैं COP UNCCD के अंदर. ठीक है, UNFCCC की बात कर लिया, then we'll be talking about UNCCD हमने बताया, फिर then we'll be talking about UN Convention on Biodiversity. So UNCCD यानी UN Convention to Combat Desertification, इसका पहला COP कहाँ हुआ था? Can anyone tell me? ये सारा कवर करा दे रहे हैं so that it would be easy for you all to actually your concept will get cleared. कोई confusion नहीं बचेगा. What is the right answer? So the right answer is actually D is the right answer. ठीक है, and it actually happened in Rome, Italy. ठीक है, ठीक है. So just remember it. ठीक है, तो ये है Conference of Parties under UNCCD, UN Convention to Combat Desertification. पहला वाला हुआ था 97 में रोम इटली में. Okay. And yes, the latest one, I mean, this year the Conference of Parties under UNCCD is going to happen. अभी दिसंबर में होने जा रहा है. ये मैंने पेड सेशन में पढ़ाया है. दिसंबर में कॉप होने जा रहा है. कौन सा कॉप होने जा रहा है? UNCCD के अंडर में. But by that time your exam would be over. 2nd या 3rd दिसंबर को होगा. तो but yes, you should know कि कहाँ होने जा रहा है and which COP it would be. जो UNCCD के अंडर में होगा. Yes, Rahil, very good. Riyadh, Saudi Arabia. B is the right answer. Yes, Dharini, you are right. COP 16. Yes, Sneha Dagar. ये वाला भी COP 16 ही होगा, which is actually going to happen from 2nd to 13th December, Riyadh, Saudi Arabia में. ठीक है? Yes, Gopesh, you are right. So B is the right answer to this question. I hope it is clear. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं. Now let's talk about UNCBD. तो मैंने आपको बताया कि Earth Summit जो है, Earth Summit जो हुआ था 1992 में, उसके अंडर UNFCCC था. तो UNFCCC का मैंने फर्स्ट और लेटेस्ट वाला बता दिया. फिर UNCCD, UN Convention to Combat Desertification का फर्स्ट और लेटेस्ट 2024 वाला बता दिया. अब CBD की बात करते हैं. तो CBD का हम लोग फर्स्ट जानेंगे और इस साल वाला 2024 वाला, जो कि आज का टॉपिक है. ठीक है. The first COP of UN Convention on Biodiversity happened when? Yes, very good. Sneha Dagar has answered me with both date, times of everything. Location. Yes, Rahil, you are also right. Sneha Dagar 1994 में. The first UN Convention on Biodiversity यानी COP under UNCBD ये कहाँ हुआ था? 1994. Bahamas is a place. Capital is Nassau. ये आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा. Let me show in the map. है ना? So here is this, है ना? ये इंडिया है, ये यूएस है, यहाँ पर फ्लोरिडा के बगल में, यहाँ पे this is USA. Here you will find Bahamas. So capital is Nassau. So you should know this. The next is the 16th COP under UN Convention on Biodiversity just happened at. अब ये बताना है जो कि अभी हुआ 2024 में. And this is today's class. यही आज की क्लास है. तो मैंने वो सब इसलिए बताया ताकि आपको पूरे बैकग्राउंड पता हो. Because if you see in recent years there are asking questions in detail. तो आपको सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए. The 16th COP under UN Convention on Biodiversity just happened at what? Yes,
Very good. If anyone tell me the name of the city, I'll be very happy. Yes, Rahil has a Rahil ने बताया काली, कोलंबिया. Yes, Gopesh Neha, you are right. कोलंबिया में जगह है काली. कोलंबिया कहाँ मिलेगा? In which continent you will find this? So in which continent you will find this? Yes, Tanishka is also right. ना अगर आप देख सकते हो ये the most important one जो कि आज की है ना. So you should know. Okay. So basically अगर आप देखोगे, so here is India. This is South America. SA I'm writing. Yes, South America में. Yes, good. So ये कोलंबिया है और यहाँ पर आपको जगह मिलेगी काली. देख रहे हो पनामा जो है ना, पनामा कैनाल जो उसके जस्ट नीचे, ठीक है. So you should know this. Colombia. Yes, Gopesh, Tanishka, Rahil, you are right. South America is the right answer. Okay, now अब हम लोग UNCBD की बात कर रहे हैं, तो UNCBD से रिलेटेड एक और चीज हम लोग जान लें. एक बार इंडिया ने भी कंडक्ट कराया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कौन से ईयर में कब कंडक्ट कराया था और कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था? अच्छा, मैंने आपको बताया है कि UNFCCC का जो कॉप होता है वो हर साल होता है, बट UNCBD या UNCCD का कॉप हर साल नहीं होता है. डज नॉट हैपन एवरी ईयर. ठीक है. इंडिया ने कब कंडक्ट कराया था? Yes, the right answer actually is 2012. Very good. Rahil is right, and it is actually in Hyderabad. So you should know it. Okay. So the right answer is 2012 Hyderabad, and that was COP 11. जैसे अभी COP 16 है ना 2024 में. So that was called as COP 11 India. So B is the right answer. Yes. Yes, Gopesh, you are also right. Rahil, you are right. B is the right answer. देखिए ये सब चीजें पूछी जा सकती है, of course, because UNCBD was recently done, conducted, so of course they can ask questions associated with that. Please read it and then answer me. I have not given the option, believing that you should answer it. Yes, Neha Dagar, Hyderabad was the right answer. अब इसका आंसर बताइए. मतलब ये X कौन सा एक्ट ये पूछा जा रहा है? Which act is being talked about? X. Yes, Rahil, very good, fantastic. So it is called as, I was asking about a law that has been made by the Indian Parliament to implement this Convention on Biodiversity की जो भी obligations है, whatever the obligations are there. Since India is also a signatory to this treaty, India is supposed to implement it, and for that we have made a law, Biodiversity Act या Biological Diversity Act 2002. ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए, 2002 में बनाया गया था. Let's move on to the next one. 2006 वाला एक्ट किसके लिए था? Which 2006 act? Please tell me the name of the law which you are asking. Now here is the next question. National Biodiversity Authority has also been set up under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and to implement the provisions of the Biodiversity Act. वही 2002 वाले एक्ट का स्टेट है ना. तो आपको बताना ये है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है. Yes, Rahil, very good. The right answer is option B, Chennai में. So B is the right answer to this question. Yes, so B is the right answer. Chennai. Forest Right Act. किसके लिए था? मतलब Forest Right Act is there, but किसके लिए? I don't understand this. In which context you are asking? ठीक है, so इसका आंसर B हो गया. Now let's talk about the Convention on Biodiversity, COP 16 जो हुआ इस साल है ना, जो कि काली कोलंबिया में हुआ. तो इन्होंने क्या लिख रखा है इसमें? they are talking about it कि photo in all meetings and all, इसमें biodiversity protocol. तो चलो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, then we'll discuss. Forest Act 2006 is related with any treaty? I need to recall it. ठीक है, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है.
So here is another question. Is there any tech issue? Is it stuck? The right answer is C is the right answer. This question. Yes, Dharini, Rahil, Dharti, you are right. Can't hear you. But there is some tech issues. I hope it is fine now. I'm very sorry, there were some technical issues. Yes, C is the right answer. ये आपको पता होना चाहिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है? So now what exactly it is, अगर आप पढ़ोगे कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी तो इसमें मेंशन भी है। तो देखो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का ना 3 गोल है, ठीक है? ठीक है, फर्स्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब है, और यही कार्टेजेना प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, which is actually linked with the problem, the living genetically modified organism या living modified organism, ये इसको कहते हैं बायो सेफ्टी, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। This is actually for to ensure कि कोई भी अगर genetic modified organism है, GM क्रॉप है या living modified organism है, तो वो बायोडायवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाए। That is about कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है? और दूसरा जो है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स। इसका मतलब है कि जो रिसोर्स है, ओरिजिनल रिसोर्स है, उसको फेयर और इक्विटेबल बेनिफिट दिया जाए, जो लोकल कम्युनिटीज है उनको भी बेनिफिट दिया जाए। यानी ऐसा नहीं हो कि जो रिच पीपल एंड द पावरफुल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ लेट्स से व्हाटएवर द न्यू टेक्नोलॉजीज और बायोडायवर्सिटी बेनिफिट्स, और पुअर्स को कुछ नहीं मिले। तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर के लिए नागोया प्रोटोकॉल इज देयर, ठीक है? प्रोटोकॉल इज देयर, ठीक है? सो दिस यू शुड नो इट, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर, ऐसा नहीं हो कि कोई अब जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस करा और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दिया। बायोडायवर्सिटी मींस द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज, है ना? तो इसीलिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल साइन हुआ है सीबीडी के अंडर में, ठीक है? आप देख सकते हो ओरिजिनली कोलंबिया में होना था, बट मॉन्ट्रियल क्यूबेक में ही जाके हुआ कनाडा में। Similarly, Nagoya Protocol on access to genetic resource and the fair equitable sharing of benefits etc. तो इसमें ये नागोया जगह है जापान में, वो ये इंश्योर करने के लिए कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स हो। जो भी बायोडायवर्सिटी का बेनिफिट है वो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रिच एंड पावरफुल को हो जाए, बल्कि जो वीकर हैं, जो लोकल ट्राइब्समैन है और ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको भी इस बायोडायवर्सिटी रिसोर्स का बेनिफिट होना चाहिए ना। So that is the idea. For that, Nagoya Protocol has been there. तो ये जो 3 मकसद है, मेन 3 इंटेंशंस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ये है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, सेकंड है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, और तीसरा है फेयर एंड इक्विटेबल शेयर, ठीक है? सो दीस आर द 3 थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है? सो अगर आप देखोगे नागोया प्रोटोकॉल्स में कौन कौन लोगों ने साइन कर रखा है, तो इंडिया भी उसकी पार्टीज है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। Now the next is UN declared which year as International Year of Biodiversity? 2006, 2010, 2011, 2019. What is the right answer? नहीं, वो सेपरेट है, कॉप में नहीं माना जाता उसको टेक्निकली, as far as I could see. एक बार आप चेक कर लीजिएगा, but as far as I remember it is not added in that. एक बार आप देख लीजिएगा, बट देखो मैं देख लेता हूँ अगर कॉप में है कि नहीं। वो जितने भी कॉप्स हैं कार्टेजेना वगैरह में नहीं हुआ ना। as far as I remember actually both are actually separate, ठीक है? हाँ, so इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी कब डिक्लेयर किया गया था? 2010
10. Yes, Rahil is right and Aravind is also right. 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया गया था. Okay. Here is the next question. Sir, is there any video on different conventions? Yes, मैंने बनाया है, बताया ना आपको, बता देता हूँ. ये वाला वीडियो मैंने आपको बताया. Please go and watch this. Someone is asking. Zorojura, you are asking about the different conventions of environment. तो यहाँ पे है, इसमें पूरा डिटेल है. So go and watch it. ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा. Okay, just search this on YouTube and you will get this. Now the next is Kunming Montreal Biodiversity Framework. ये बहुत फेमस हुआ था. ये कौन सा कॉप था अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? Very important, very 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 important. देखो, आइडियली होना था कुनमिंग में. कुनमिंग चाइना में जगह है, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस एक्चुअली हुआ मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह है. पर चाइना और एक तरह से समझो दोनों ने मिलकर होस्ट किया, बट प्रैक्टिकली मॉन्ट्रियल में हुआ था. तो इसीलिए इसको दोनों को मिला के कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं. और लास्ट वाला हुआ था COP 15. और मैंने आपको बताया कि CBD के अंदर COP हर साल नहीं होता है. सो एक्चुअली इट हैपेंड 2 years बैक इन 2022. 2020 में होना था, ठीक है, बट हैपेंड इन 2022. ठीक है, आइडियली इट वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2020 in Kunming in China, but actually because of some reasons and all, the COVID and all, Montreal में हुआ, कनाडा में. It is called as COP 15 under CBD, Convention on Biodiversity. ठीक है, और इसी को पेरिस अग्रीमेंट फॉर नेचर भी कहते हैं, बिकॉज एक पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है जो COP 21 UNFCCC के अंडर में, जो ओरिजिनल वाला पेरिस अग्रीमेंट है. लेट मी एक्सप्लेन. पेरिस अग्रीमेंट है COP 21 के अंदर में. ठीक है, दिस इज एक्चुअली अंडर UNFCCC के अंडर में. बट ये वाला जो बता रहे हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर में पेरिस अग्रीमेंट फॉर नेचर है. ठीक है, सो इसको पेरिस अग्रीमेंट फॉर नेचर इसीलिए कहते हैं कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंडर में ये डिफरेंट है. सो यू शुड नो इट. ठीक है, the next one is the current extinction phase of plant and animal is called as what? Because when you are talking about biodiversity, biodiversity means क्या? Variety of plants and animals. And जितना ज़्यादा, the more diverse the ecosystem is, the more stable the ecosystem is. जितना ज़्यादा plants और animals का variation होगा, उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब varieties होगा, उतना ज़्यादा अच्छा है. तो अभी हम लोग ना, we are actually this, अगर आप environment जानते होगे, if you have read something about environment and all, you should know it कि current extinction phase है. नहीं, 2023 में कोई CBD नहीं हुआ था, बताया ना. COP 15 वाला लास्ट था, फिर ये COP 16 है. ये COP 15 वाला था, Kunming Montreal, और ये COP 16. The current extinction phase of plant and animal is called as what? Yes, Preetham, very good. It's called as 6th mass extinction कहते हैं. B is the right answer. या Holocene extension भी कहते हैं. Extinction. Holocene extinction because we are living in Holocene era. Yes, Preetham, Rahil, you both are right. और 6th mass extinction भी इसको कहते हैं. ठीक है, so you should know this. Yes, Rahil, Aravind, Preetham, you are right. B is the right answer to this question. Now let's move on to the next one. The theme of COP 16 under CBD जो अभी हुआ just Cali in Colombia में. What is the theme? This is important. And there's a request, guys. Everyone, please press the like button and subscribe to the channel also. ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी अभी जस्ट हुआ, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेकर को इस पर नजर पड़ी कि चलो इससे क्वेश्चन पूछते हैं, सो ऑफ कोर्स यू विल मिस इट. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यू शुड आंसर. द राइट आंसर एक्चुअली इज बी, मेकिंग पीस विद नेचर. यस, प्रिया अग्रवाल इज राइट. हाँ, सो प्लीज डू रिमेंबर इट. दिस इज मेकिंग पीस विद नेचर. आपको बताना चाहिए कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का थीम है. ओके, तो और भी कुछ चीजें देख लेते हैं. अगर आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली अबाउट फ्रॉम देयर वेबसाइट, है ना. काली कोलंबिया में हुआ, है ना. देन इट इज टॉकिंग अबाउट
है ना। कार्टेजना प्रोटोकॉल का 11th मीटिंग था और 5th मीटिंग था नगोया प्रोटोकॉल का, ठीक है, ये भी जान लेना। तो 11th मीटिंग था कार्टेजना प्रोटोकॉल का, सीपी लिखा है, और एनपी ने नगोया प्रोटोकॉल का 5th मीटिंग था। इट इज रिटन, अगर आप देखोगे उनके लिखा होगा, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। यहाँ जो सीपी लिखा, कार्टेजना प्रोटोकॉल की 11th मीटिंग, नगोया प्रोटोकॉल की 5th मीटिंग, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 था अंडर यूएनसीबीडी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। So this you should know, and it was tasked to actually give a further step towards conveying Montreal Global Biodiversity Framework जो last time हुआ था, उसी को एक step ahead था, ठीक है। Now, since we are talking about conveying Montreal Global Biodiversity Framework, तो this is a question for you. ये actually last वाला काफी famous हुआ था, and that is why I'm asking it. The results at COP16 are important strides towards achievement of dash target for 2030 laid out in conveying Montreal Global Biodiversity Framework, adopted in Montreal in 2022. कितना? How many targets are there for 2030 in conveying Montreal Global Biodiversity Framework? कितने targets हैं? Yes, Aravind is right and Dharani is right. The right answer is D. 23 targets हैं। देखो ये उनकी वेबसाइट से मैंने निकाला है, ठीक है। ये एसडीजी वाला टारगेट नहीं है, प्लीज बी केयरफुल, डोंट से कि 17 एसडीजी गोल्स, वो नहीं है, दिस इज डिफरेंट। सो द राइट आंसर इज डी, इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो यू शुड नो इट बिकॉज़ दिस वाज इन द न्यूज़ एंड ऑल, तो ये सब पता होना चाहिए। ओके, नाउ बिफोर एंडिंग द क्लास, दिस इज द होमवर्क। And after the class over, you will be provided recorded video. Write these two in the comment section. खास की ये वाला current affairs का part है, so you should know it. So this is all about today's class. Thank you everyone. Now I'll be meeting you today at 8 p.m. आज 8 p.m. वाली class join करना, बहुत अच्छा question मैं लाऊंगा, ठीक है। I'll be bringing lot of questions, static GK questions. So do join me at 8 p.m. So thank you everyone. Thanks for watching.